अस्तु मोहनतवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रिया प्राणनाथ विषभानंदनी श्री मुखाब्जर सलूल सकपद राधिका पदतली कृपा स्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्र शेखरं वंशी विभूषित करार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्न बिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द नेत्रा कृष्णात् परम तत्त्वं किमपि अहं न जाने कृष्णात् परम तत्त्वं किमपि अहं न जाने न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विभं न जाचं ब्रह्मं सकल जन कामं वरवधू मे सदा काली काली प्रोदपति विदचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद सभी लोग हाथ उठाइए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पदों नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरे कथा पिपासु वृंद सभियों की चरण कमलों में The feet of everyone. Please accept my Dandavat Pranamas accordingly. आज श्रीमद् भागवत कथा की So today is the last day of Bhagavad Katha. वास्तव में काल ही हम उनके भागवत Actually, yesterday we have already finished the Bhagavatam, but still समय और कार्य की थोड़ी देर होने के नाते because of our schedule was a little bit late. अधिक रूप में रखा गया। That's why we kept for one more day. Shastra explains also. Adikanto na doshaya. There's no problem कोई with more. वस्तु यदि अधिक रूप में हो, If you do something more, कम होनी नहीं चाहिए। there is no problem. Should not be less, but more no problem. कम होनी नहीं चाहिए। Should not be देखो, less, but more there is no कहा problem. जाता है, Shastra भोजन कम explains. करें। You can eat. You should eat less. भोजन कितना करना चाहिए? You should eat less. किंतु But और बाकी विषय में क्या other क्या होनी things, चाहिए? अधिक होनी it चाहिए। should be more. है? क्योंकि भोजन ज्यादा कर ले Because if you eat तो too हो much, सकता है आपके गड़बड़ी हो रही you may be sick or इसमें this शास्त्र में might कहा give जाता some है, harm to your mother. अति भात्य प्रसाद और नींद भी बढ़िया आती है महाराज। हैं? ज्यादा भोजन करने से नींद भी बढ़िया हाँ ज्यादा भोजन करने If you पर eat भी too much नींद भी also, आती you है। feel too much sleepiness. हैं? प्रभु जी का नींद प्रभु जी मैं तो से प्रयास करता हूँ नींद आ जाए चलो कथा अभी केवल हम एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद की So now we'll speak something about the essence of the 11th and 12th canto. दो स्कंद की कथा और आगे सारी स्कंद की कथा अल्प विस्तार रूप में हमने आप लोगों के निकट प्रस्तुत किया।
we've क्योंकि श्रीमद् भागवत presented में some of the other इतने cantos to you. सभी कथाओं को 7 दिनों में So in वर्णन 7 करना days, it's not possible to describe all the stories of the है। Bhagavatam. श्रोता कहाँ मिले? How to get the proper श्रोता तो सोचते हैं listener. जल्दी खत्म कर दो, The listener हम चले thinks, जाएं। I want the katha to है कि finish नहीं? quickly and I will go इतने back to my समय कहाँ house. बैठे? How can you sit down for so long time? Your mind is disturbed. तो संक्षेप रूप में मैं एकादश So, स्कंद की in कथा briefly, I will प्रस्तुत करता हूँ। present to you 11th canto. देखो कल हम द्वारिकापुरी की कथा So yesterday we heard about Dwarkapuri Katha. ओ द्वारिकापुरी स्वयं भगवान In Dwarkapuri, Swayam Bhagavan, हाथों के द्वारा with his वो lotus hands, he सुरक्षित is protecting Dwarka. गोविंद भुजंग ग्रहित Govinda with his arms, भगवान गोविंद की लंबी भुजाओं के with द्वारा his long arms. वो द्वारिकापुरी संरक्षित था। Krishna is protecting वहाँ पर कभी protecting पाप पुरुष Dwarkapuri. प्रवेश नहीं कर सकते, Papa पाप पुरुष Purush, प्रवेश नहीं कर सकते। The इसलिए कथा प्रसंग में personality of the sins cannot come in Dwarka. Not even the curse of the Brahmanas have effects दक्ष प्रजापति के द्वारा अभिषेक in हो Dwarka. गए। Like for example, तो Narada कहीं Rishi was एक- cursed by एक- Daksha एक Prajapati. स्थान पर गोदहन काल तक Narada could not stay anywhere for longer than the time for क्योंकि looking दक्ष a cow. प्रजापति के सभी के जो है वो Because Daksha Prajapati, सन्यासी बना दिया। he made everybody become a sannyasi. सब विद्या अभ्यास करा करके सभी के He ऐसी taught, बुद्धि दे दिया, ये सब घर छोड़ knowledge to करके everyone. सब सन्यासी बन गए। Like Narada Rishi इसलिए gave teaching to the sons of the Prajapati that they should take sannyas. और मेरे सारे पुत्रों क्या So हो Daksha गया? Prajapati said, because you सन्यासी preached बन to गए। them, all of them अरे became विवाह शादी sannyasis. नहीं करे If they won't get married, तो घर संसार कैसे चले, सृष्टि कैसे how possible the बढ़ेगा? creation will increase, the अब population of तुमने the ऐसे पाठ world? पढ़ाया, ज्ञान वैराग्यवादी But दे you spoke दिया, to them about जिसके Gyani Vairagya, so फलस्वरूप many things, सब and as घर a छोड़ result of करके this, चले गए। they've left the house and left. इसलिए प्रजापति ने So नारद Prajapati ऋषि को हिसाब दिया जाए, cursed दे दिया। Narada Rishi. अब आज से आप From now on, गोदहन काल तक आप रहने से, गोदहन माने you should not, दूध दोहने के जितने समय the लगता time है, that's taken 5 for मिनट, milking a 10 cow, मिनट, 20 मिनट, 5, 10 minutes or 20 minutes, उतने समय तक आप एक स्थान में नहीं रह सकते। you should not stay for a long time. नारद ऋषि बोले अच्छी बात है, More हम than this जहाँ जाएंगे time, 10, 20 सर्वत्र minutes. ही जो है Then Narada Rishi said, भगवत oh, this is कथा very प्रचार nice. करेंगे। I can preach holy names भाई everywhere then. यीशु के यदि वैराग्य बनाना है उन्हीं If- समय थोड़ी लगता If है। you want somebody to become renounced, you don't need so much time जिसके to do पूर्व that. में संस्कार है Those who have some kind in वो previous तो lives, वैरागी हो जाएंगे। they will be able to be और हजार renounced. सुनाने पर भी Otherwise, if you even 1,000 times you tell the truth of renunciation for someone, the person will not accept it because the person has no samskaras. तो इसलिए कहा जाता है ब्रह्म साधुग्रस्त नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते So Narada करते Rishi जब थक spread जाते it थे, so he was going everywhere, traveling everywhere. But when Narada was used to be tired, he used to come to Dwarka to take rest. ब्रह्म साहब प्रवेश नहीं करते। Because the curse of a Brahmana, like the case Daksha Prajapati, could not enter Dwarkapuri, so that's why Narada could stay there a long सुखदेव time. गोस्वामी पाद आगे भगवान के अंतर्धान लाभ की कथा So को also Shukadeva Goswami told some of the बोलने लगे। disappearance of Shukadeva, ये स्वयं भगवान of Krishna. Shukadeva told about किस disappearance of प्रकार Krishna. इस धराधाम से चले How गए, Krishna left उस this कथा world, को इंगित देने लगे। he indicated भगवान this इस katha. संसार में 125 साल तक Bhagavan, he stayed in this world for 125 years in this अनेकों world. असुरों को निधन He किया also killed many demons, और सभी के इस प्रेम प्रदान आदि की gave prema to दुष्ट everyone के also, दमन किया killed the और demons, शिष्य के उन्होंने पालन किया। protected the ये सफल devotees. कथा वर्णन करते उस समय परीक्षित महाराज ने So Parikshit Maharaj, he made one question in this context. ये भगवान जदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, Bhagavan was अर्थात कृष्ण staying in the house and स्वयं doing Bhagavad भगवान Bhajan. उसी प्रकार स्वयं एक भगवान आदर्श in this way, गृहस्थ की he was आचरण showing the करने लगे। behavior of an ideal grihastha. क्योंकि भगवान गीता में भी कहा Because जब जाति Bhagavan से in Krishna, he तत्व says, विवेक जना सजत्वमणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते, जो जैसे आचरण करते हैं और उनके अनुगत वही मार्ग में चलते The हैं। like juniors or they will follow the behavior of that person who is like स्वयं आचरण करके bigger, सभी or भी their followers will follow his behavior, right?
So that's why Bhagavan set the perfect आचरणहीन व्यक्ति जो behavior कार्य आदि आचरणहीन व्यक्ति गृहस्थ. जो उपदेश देते हैं Those persons were not following वो that, कोई those लाभ नहीं होता and है। give some instructions to you, but he himself is not हो following सकता है that. कुछ समय के लिए लोग उनके ऊपर आकृष्ट Actually, हो it जाते doesn't हैं work. किंतु बाद में सब Maybe कुछ for छूट some जाता है। time, everybody will maybe be attracted by him, but after some time they give up all this. ये आचरण करके जो So you have to उपदेश देते हैं give instruction. Why we will उसी also की लोग follow ग्रहण that. करते हैं। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण So that's why Swayam Bhagavan Shri एक Krishna, गृहस्थ एक आदर्श गृहस्थ की showed- भांति रहने लगे। he stayed सबकी his आदर करना ideal सम्मान grihastha, करना बड़ों के सम्मान करना honoring everyone, honoring the superiors. आज तो लोग अपने Kali माता Yuga, पिता को भी सम्मान देना नहीं People चाहते। don't even want to give respect to their पाश्चात्य own देशों parents. की This culture प्रभाव की of तरफ Western culture, Western countries, वह पाश्चात्य देश के विचार लेकर के चलते they want to follow the Western culture. पाश्चात्य देश में वेस्टर्न कंट्री में माता पिता In the वृद्ध हो Western जाए, country, when उनके the parents कहाँ भेज become देते हैं? old, ओल्ड हाउस parents में are sent to भेज the देते हैं। old people's house. माता पिता की सेवा कोई करना नहीं चाहते Nobody wants to serve their parents. भले ही माता पिता के पैसा तो दे देंगे Maybe they'll give money for to the parents, किंतु अपने हाथ से but माता with their own पिता hands serve? No, they don't want. है। आज हमारे भारतवर्ष में ऐसी होती जा रही But है। India is also क्यों हम so सब so they इंग्लिश also मीडियम becoming पढ़ this रहे हैं ना? because now we are also studying English क्या बोलते हैं medium. उसके कौन से स्कूल कहते हैं? Which kind of school? कॉन्वेंट स्कूल कहा जाता है। कौन सा? अब उसके नाम सुन करके सभी गर्भों में हाथ Convert school, some school, and then everybody's जहाँ proud to इंग्लिश listen. मीडियम पढ़ Oh, चुके हैं। I studied English medium. और सब ऐसे बनते जा रहे हैं। English medium I बहुत सूट studied. बूट टाई बंद करके Then you're Okay, using हम suit, सब wearing बहुत- suit, tie, and you think, है। oh, yeah, very जो nice. धोती पंजाबी पहनते हैं धोती पहनते हैं ये तो Ah, तुम्हारे those ओल्ड स्टाइल है। those who are using Punjabi and dhoti, this is old style. You should not wear this. क्षमा करें Forgive me, बोलना तो पड़ता है but I have to speak भागवत these things. ऐसी कहा है। Bhakti is क्यों saying, कहते हो? भगवान कृष्ण because चंद्र Bhagavan Krishna Chandru एक आदर्श showed the ideal grihastha behavior, है दर्शाया कैसे आदर्श गृहस्थ हो ideal grihastha behavior, और ब्राह्मणों की सम्मान देना and also honoring the brahmanas. ये एक गृहस्थ की एक महाप्रभु एक हमारे चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया Chaitanya Mahaprabhu also showed this. कहीं ब्राह्मण के अनादर न हो We should never dishonor a brahmana. ब्राह्मण के सम्मान करें We should honor the brahmanas. क्योंकि शास्त्र में कहा गया ब्राह्मण के क्या कहते हैं भूसुर कहा जाता है The brahmanas क्या are बोला? called busur. भूसुर Busur. गुरु गुरु गुष्टे गुष्टलेसु सुजने भूसुरगणे समुद्रे दामने Busur. Like demigods on earth. कहीं ब्राह्मण के अनादर न हो इसलिए स्वयं भगवान ब्राह्मणों का आदर आदि करते थे So Swami Bhagavan is honoring किंतु यहाँ पर सुखदेव Brahmanas. गोस्वामी जब कहने लगे देखो वह Shukadeva वंश Goswami में said, but in this Jaduvamsha, dynasty of the ब्राह्मण Jadus, की कोई सांप ला दिया a brahmana इसको सुन करके परीक्षित मारे ये कैसे होगा was cursed, I think. So Parikita asked, how possible आपने this? कहा Because you ये yourself स्वयं told भगवान that Swami ब्राह्मण Bhagavan, के आदर करते थे he was always honoring the और brahmanas. दूसरी वो दारावती And दारिकापुरी another point is also that स्वयं in भगवान Dwarikapuri, अपने भुजाओं के द्वारा Swami Bhagavan would protect Dwarika with his own arms. जिसमें कोई ब्रह्म शक्ति प्रकट So no curse of any brahmana could not enter that place, है। Dwarika. तो वहीं पर ब्रह्म शब्द कैसे लग गए उस कथा में सुनने के लिए So to hear this उत्पन्न answer, हुआ। Parikit Maharaj was really उस कथा eager. को कहते हैं सर सुखदेव गोस्वामी पाद कहने Shukadeva लगे, Goswami Pada told to answer to this. ये देखो कोई उद्दंड होकर के चले If somebody is doing something wrong, the duty of Lord is to punish this उद्दंड के person. दंड देना To punish someone who is doing something wrong, this is the स्वभाव का है। nature of Lord, nature of God. इस कथा को वर्णन करते हुए ये सुखदेव गोस्वामी पाद वह दारिकापुर के एक लीला कथा सुनाया Then Shukadeva Goswami told one Leela देखो of एक दिन Dwarikapuri. यदुवंश के कुछ उद्दंड One day, बालक some naughty boys of the खेलते Yadav खेलते dynasty, they're playing. संत महात्मा पास पहुंचे मैंने पहले ही कहा था They came to a संत saint. महात्मा सभी लोग दारिकापुरी में आकर के I told that in Dwarika, भगवान के all the चरण saints कमल के used to सामने come there में to the Dwarika, विराजमान many saints, and they used to stay near the feet of क्योंकि स्वयं Krishna. भगवान ही बड़े संत महात्मा के Because आदर Swami करते Bhagavan थे। also used to respect and honor so ब्राह्मणों much के the आदर Brahmanas. करना, संत महात्मा को So आदर Krishna करना would respect and honor the Brahmanas and the sadhus. सिखाया So कई संत Lord महात्मा की taught अनादर us न how हो to do this. We should never इसलिए dishonor स्वयं a saint. भगवान श्री कृष्ण
So that's why Swayam Bhagavan Shri Krishna, महल भी बनाया जहाँ पर संत महात्मा के निवास हो। so he made even one palace just for the saints to reside when ब्राह्मण they के come. लिए संत It's called महात्मा के Santa लिए Nivas. खाना पीना रहना So Krishna would arrange food and everything for all the saints who were there. बड़े बड़े संत महात्मा साधारण कोई संत महात्मा Not नहीं। ordinary saints, okay? Like for example, Jaggabalka, Narada Rishi, Durvasha, this very great, like Astavaka Rishi also used to go to Dwarka. All these rishis, very high class saints used to go to Dwarka and they used to stay there. और वहीं पर संत महात्मा हरि का चर्चा आदि करते And they used to speak Harikatha. संत महात्मा जहाँ पर विराजमान होते हैं Where क्या the करते saints हैं? are staying, खा पी they are और always, सो गए। what, eating and sleeping? No. संत महात्मा के यही लक्षण This is the होता है। symptom of the saints. वो But जहाँ पर भी बैठ जाए whatever they sit down, वो क्या whatever, करना शुरू कर देते they हैं start to do what? हरि कथा शुरू कर देते हैं To speak Harikatha. इसलिए That's why द्वारिकापुरी में सदा सर्वदा कहीं न कहीं always जो in है Dwarkapuri somehow there was also always going on some Harikatha day and night. चर्चा होती थी। Bhagavad like तो discussion एक about दिन ये सब कुछ Harikatha. दंड बालक जो है द्वारिकापुरी One में, day some naughty boys in Dwarka ये लोग खेल कूद करते करते देखा संत महात्मा बैठे हुए हैं, playing, they saw there was a saint there संत sitting. महात्मा अपने आपस में बातचीत कर रहे थे भगवत कथा The saint was speaking Harikatha. परस्परानु कथानम each other. संत महात्मा एक संत महात्मा दूसरे संत When the saints meet each other, चर्चा ही करते हैं they start to विषय कथा नहीं not speak material things but speak about God. संसार के लोग कहीं पर बैठ जाते Materialistic हैं people, wherever they sit down, whatever, they start to speak material things. आईसीएस परीक्षा में एक ऑफिसर पूछा So there's one officer that मैथमेटिक्स प्रश्न पूछा one mathematic question. एक स्त्री जो है A woman 10 मिनट में 10 रोटी in 10 minutes can make 10 chapatis. 10 मिनट में In कितने 10 minutes, one woman can make 10 chapatis. अच्छा वहीं पर 30 But 30 महिला women रोटी बेल रही है आज are बताओ making कितने chapati, रोटी like बेल opening the पाएंगे 10 chapati मिनट dough. में? So how many they are able to open in the same time? मैथमेटिक्स पढ़ी So नहीं question, आपने? and answer is not एक even one. महिला यदि 10 So रोटी if one बेली, lady can make 10 और 30 महिला कितने बेलेगी? chapatis, 300 तो 30, होनी चाहिए ना they would तो able बोले to एक भी open नहीं। 300, but no, बोले क्यों not even नहीं? one. बोले Why? जहाँ पर स्त्रियां एक साथ में तो वो बेल नहीं पाएंगी बात ऐसे ऐसे करके बात करते रहेंगे Because women together, they वो don't, चक्की घुमाएंगे ना? they'll just speaking to each other. बात करते रहेंगे They're actually moving the, how to say, the roll for the opening the chapati, but actually speaking. वास्तव सत्य ही कि नहीं है Slowly माताएं working यहाँ पर and बैठ speaking a जाती lot. हैं, When the बस mother बोल- sit down, finish. अपने चर्चा शुरू कर देगी Start to speak वो about बोलते हैं, मैं themselves. वो नहीं करती है बोले अच्छी बात है। She's saying she doesn't चलो like हम that. इसने Very कहा nice. जो संत महात्मा जहाँ पर विराजमान होते हैं संत महात्मा कोई So where the saints are बाहर staying, की बात नहीं करते the saints were not speaking any material भगवत things. चर्चा Only ये speaking उद्दंड कुछ Harikatha. बालक So some naughty boys, और वो बालक ने किया कि खेल कूद करते करते देखा संत महात्मा बैठे हुए हैं हम कुछ मजाक करते हंसी कर playing, लेते हैं this was saint and thought, let's make some ऐसे joke with कि the sadhu. देखो जम्बूवती नंदन संभव के जो है सुंदर स्त्री So में Samba, the son of Jambavati, है संभव Samba, क्या की Shamba, स्त्री वेश बना दी he, son of Jambavati. और He disguised as a woman. अलंकार के द्वारा सुसज्जित कर दिया And he गले also में dressed सुंदर up very माला भी nice, डाल दी, put one garland और on his घूंघट neck, डाल दिया cover his head with the veil, और veil. पेड़ में कुछ कपड़ा भी बांध दिया And he also put some artificial clothes in his belly. और लेकर के जहाँ पर संत महात्मा And he came भगवत where the चर्चा कर saints were रहे थे, discussing about God. वहीं पर जा करके प्रणाम करके बोले आप लोग तो संत So he महात्मा did हो, obeisance and told, त्रिकालदर्शी हो you're saints. आप ही Yeah, बताइए you're saints, you can see past, present, and future. स्त्री जो आई है So please tell me, this woman who came just ये now, बहुत नाजुक है she's very shy. इसलिए वो That's अपने why she's covering her मुख head. के जो है कपड़ा ढक करके रखे लंबी जो है घूंघट डाल करके रखे With देखो, that अभी दो एक दिन में ये very, बच्चा sorry, that प्रवेश big प्रसव करेगा। veil. But after 2 ये days, लड़के she'll मन में बहुत deliver. इच्छा the है baby. उत्सुक है ये लड़का But she's जन्म so देगी कि eager to लड़की know जन्म देगी she'll give a birth to a boy or a girl. आप तो त्रिकला ऋषि है But you heard अब देखते ही Tikala उनको पता चला कि जैसे and just from है कि नहीं? seeing her, you can already know तो इस the प्रकार baby will be कृष्ण a boy or के girl. संत महात्मा एक बार बोले
इतना नजर नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। So the saint didn't give much attention, but then he insisted. ध्यान नहीं दिया। तीसरी Again, they बार didn't give attention to the saint. वो बालक Third ने time, कहा, they insisted. जोर से चिल्ला गया, अरे So the boy was screaming, बताइए ना, Saint, you're a saint, so tell me. ये आसन्न प्रसव है, गर्भवती है, She's pregnant, is about to give birth to baby. ये लड़का और लड़की जन्म लेंगे, आप बताइए। It will be boy or तो girl, उस tell समय me. एक संत महात्मा थे, Then there was a saint there, बहुत क्रोधी। very जबकि angry. श्रीमद् भागवत में डायरेक्ट नाम नहीं दिया गया, Bhagavatam doesn't tell मतलब the name ऋषि को नाम exactly. दिया। Who was किस it? ऋषि ने क्रोधित होकर के सब दिया, Which Rishi was angry, but doesn't mention his name लेकिन exactly. उसमें एक ऋषि का टीकाकार कहते हैं उसमें नारद ऋषि अथवा दुर्वासा ऋषि, But they say in the commentaries must be Durvasa or Narada Rishi. उस दुर्वासा ऋषि दुर्वासा ऋषि Okay, Durvasa Rishi. He became very angry. Foolish. संत महात्मा के साथ हंसी मजाक करते हैं, You want to make fun of the sadhus? तुम लोग उद्दंड हो, You're सीमा छोड़ very, दिए। like how to say, like Always naughty in a out. bad way, like really transgressors. इनके पेट से जो जन्म लिया ना, न बच्चा होगा न बच्ची, न So there will be लड़का no लड़की। boy, no girl from her womb. मुसूल जानते हो? What will come, it will be a musul. और Musul, उससे तरह this जो iron ball, will take birth. ढंग से And from this, your Jadu dynasty will be भाव destroyed. दे दिए। Viva! हैं? यह सुनते सारे बालक Hearing this, all the boys, they were afraid. हैं? और जल्दी जल्दी सम्मुख लेकर क्या है, और कपड़ा खोल दिया, कपड़ा में And they ऊपर भी तो ऐसे open- कपड़ा बना हुआ था, Opened the खोल fake करके belly, देखा, and they किसी saw के संत महात्मा के वाक्य शब्द जो व्यर्थ थोड़ी the होते words of the saint will never go in vain. हैं? खोल करके देखा क्या, They opened एक the ऐसे belly and they found the मुसल जानते musul. भी नहीं, किस You know what is मुसल क्या musul? कहते हैं? पीतल के होता है, तांबे के होते हैं, लोहे के होता है, Musul is made of which किसके होता है? material? तांबे का, लोहे का। It's iron जिस ball. दिन देखे हैं ना, ये वो जो It's मुसल जो होता है, iron. It's वो made of लोहे का iron. होता है। So the हैं? हम लोग musul घर is में made of भी iron. देखा, चावल कूटने In my के house, लिए, I saw that हैं? to पता धान अथा गेहूं के कूटने के mash लिए the एक लकड़ी के rice ऐसे or विशेष wheat. घर बनाते हैं, उसके नीचे There was जो a है big लोहे ऐसे wood. लगा देते हैं, In the middle, there was a और iron उससे जो ball. कूटा जाता है, From this, you can उससे धान गेहूं हैं, separate the rice or the wheat from its husk. चकनाचक चुन कर देता है। देखो जल्दी जल्दी देखा तो लोहे के टुकड़ा इतना So बड़ा, very quickly, they saw this अभी very क्या piece करें? of iron ये कहाँ ball. से आ What to गया? do? Where this has come from? सभी के सिर पर चक्कर आ गया। Everyone was देखो like साथ ही साथ सारे बालक ने क्या की, confused, and then all the friends उग्रसेन के पास गए। quickly they came to Ugrasen. उग्रसेन राजा थे Ugrasen was the और king. सारी बात बताया। They told him everything. उग्रसेन बोले अभी क्या की जाए, Ugrasen said, "But what ये to do काम now? करो, Okay, let's ना do रहे anything. बांस और ना बजे But there is no bamboo, nobody will be able to play the ऋषि flute. साहब व्यर्थ हो जाए। So maybe let's make this इसलिए भी कहा, देखो, curse of the Rishi समुद्र के prove तट पर बड़े itself पत्थर wrong. के- पत्थर So के let's do one चट्टान thing. पड़ा हुआ है ना, There are many big उस rocks पत्थर on के the banks चट्टान of के the ऊपर ocean, इसके the घिस beach. Let's grate this iron ball on the banks सारे of the लोग क्या ocean करने लगे, in these उसको rocks. लेकर के पत्थर के ऊपर So they घिसने brought लगे। और घिसते घिसते iron ball and started to एक grate छोटी it. टुकड़ा गया। And then it हाथ became में really पकड़ small. नहीं आता। They could even जैसे take it आपको in दुकान their है hands. ना, बाद वो अदरक चीज लेकर के कसते हैं, जब आप छोटा हो जाते हो फेंक देते हो, बाद में चलो इसके रसोई में डाल देते हैं, और क्या करोगे, हाथ में पकड़ नहीं आता है। Just like when you're grating तो उसी something, तरह जो हाथ में and for पकड़ example नहीं ginger, आ रहे, वो लोग ने there किया are कि also a small उसको pieces लेकर left, के very small piece, and समुद्र sometimes में you even throw it in the फेंक sabji. दिया। Sometimes not, because it's very small. और उसी समय समुद्र में In the एक same way, मछली a क्या part की, of the iron ball was left from after grating in the rocks. So they threw it in the ocean, एक and मछुआरा a ने fish उसको मछली ate को it, पकड़ा, and it came to the belly और of the वो fish. मछली को One जो है, fisherman took this वो fish, लेकर के एक fished the गैर fish, शिकारी को बेच and दिया। then he found this iron ball in the stomach of the जरा fish, से एक and he gave वैर, fisherman वो gave मछली this को लेकर iron जो ball आए, देखे to तो काटा, small piece of iron ball, one small पेट से देखा वो छोटी Gave सी it to a चीज़ है, hunter. नहीं खाऊंगा। It's very small और चलो stone. काम में लगा लेते हैं। He वो thought, जरा okay, से I can बयान किया put कि it in, like use it अपने in, पशु शिकार करने के use it लिए in तीर something. के अग्रभाग में, So the hunter used that for the point of his arrow. चलो आगे की कथा सुनो। Anyway, इधर वो जो मसूर के जो पत्थर के ऊपर जो घिसा, घिसते घिसते उसके जो कौन जितने भी आ गया, वो कौन समुद्र के जल से
So that powder that came from the grating of the iron ball in the rocks, because of the waves of the ocean, there was a kind of grass, like a bamboo, like a very thin bamboo, like a grass. It was very tall. This was coming, was created. So it's a very sharp leaved, plant. So this plant was born from this powder of the iron ball. It was like this very sharp bamboo. One day, the Jadavamsis from dynasty of Yadus, they came there in this place in the beach. They had drunk something. They drank some, and in the beginning they were speaking very nicely, like chit-chatting. And then they started to quarrel to each other. Before everything was okay, but then just from out of nowhere, a big fight started, and they started even to beat each other. So in the same way, so the Jadavams, people, they started to attack one another. First hand by hand, like punching, or then they took all these plants, very sharp, like a bamboo, very sharp. They started to beat each other with this plant. It's like a spear. So, but because the curse of the saint will never go in vain. So actually what happened is that they killed themselves. Kill one another. They killed one another, like this. And they killed one another, and very quickly, like all the Jadava dynasty was destroyed. Bhagavan actually knew. Actually, it was just an excuse for them to go away from this material world. So Swayam Bhagavan also left this place and went to Prabhas. And then Prabhas, Krishna was sitting on the branch of a tree. Uddhava was also there. Swayam Bhagavan gave some instructions to Uddhava. Here, there is also one katha also. Maybe you'll ask. Okay, that curse of the Brahmana told that all the Jadava dynasty would be destroyed. But how Uddhava was saved from this? Because Swayam Bhagavan told Uddhava, you have to go away very quickly from this place. After 7 days, Dwarkapur will be flooded under the water, will be immersed under the water. So, Vidur? Especially you have to give my message to Maitri and Vidur. Because they are suffering so much for me. They want to know about me. They want to hear from me. Bhagavan gave many instructions to them at that moment. It's called Uddhava Krishna Samvad. Katha is also very beautiful. Srimad Bhagavatam 11th canto describes how to follow Varnashram Dharma. What is the symptom of Varnashram Dharma? What is the symptom of a Vaishya, Kshatriya, Shudra, Vanaprastha, Sannyas, Brahmachari? About all these Varnashram, how to stay in these different ashrams. All this is described in the Bhagavatam. Also about Karma Yoga, Gyan Yoga, also about Bhakti Yoga also. So Bhagavan told, look, by karma, jnana and yoga, you cannot attain me directly. But by bhakti yoga, you can meet me. You can come to me. By bhakti yoga. But Mahaprabhu told, what is bhakti yoga in Kali Yuga? It's something very easy. What is bhakti yoga in Kali Yuga? Only chanting the holy names. Harer Namo Kevalam. Kalau Nasteva Gati Ranjita. In Kali Yuga, don't need to do anything. Just take one Japamala, is enough. And chant holy names. What to do? Who has a Japamala? Raise your hand. Who does not have a Japamala? Raise your hand as well. Everybody has Japamala. Very nice.
इसलिए भगवत नाम को करिए। So in Kali Yuga, you have to chant holy names. नाम अधरा सुमरि सुमरि नर उतर भगवत नाम करो बस। Chant holy names, that's it. जपमाला लेकर Take the Japamala from the Guru and chant holy names. ये कलियुग में और कोई शरण In Kali Yuga, there is no other way. That's why Swami Bhagavan also told. न साधति मान योगम न संक धर्म उद्धव न साधस तपस त्यागु जथा भक्तिर मम अर्जिता। स्वयं भगवान कहते हैं Swami Bhagavan told, कर्म ज्ञान योग तपस्या Karma, Jnana, Yoga, Tapasya, you cannot attain to me by these means. ये कलियुग में केवल In Kali Yuga, only by Bhakti Yoga मैं you can attain to me. No need to do anything. और भी सहज रूप का Very easy. देखो और मंत्र आदि जप करो बहुत नियम है। Like if you chant many mantras, you have to follow many rules. Wake up in the Brahma Muhurta, you have to take to bathe, to put tilak, to do achaman. So many rules for chanting the mantras. नाम करने में क्या है? But to chant the Harinam, कोई नियम नहीं there's no rule. There are no है। rules. जथा तथा नाम Eating, sleeping, walking, any moment, whether your body is pure or impure, है। स्नान करे अथवा whether you have bathed or not bathed, like having bathed. टूटने के साथ ही साथ As soon as you wake up, immediately जपमाला लिखो। take your japamala and sit down. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 Hare हरे राम 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 हरे हरे कितना सरल उपाय दिखाया। और भगवान ने क्या कि अपने So सारे easy, शक्तियों so के simple. नाम ही प्रवेश And God put all His potencies in the holy names. किया। इसलिए कलियुग में नाम की महिमा है। In Kali Yuga, we see the glories of the holy names. इसलिए भगवान कहते हैं न सदति So Bhagavan says, "Na sadati न manjam." संत धर्म उद्धव न सदस तपस त्यागु यथा भक्तिर मम अर्जिता। देखो आगे इस प्रकार से Cannot attain to me by any other means, only for Bhakti Yoga, through Bhakti Yoga. So Krishna gave many instructions to Uddhav, रोने लगे and Uddhav started crying. And then, भगवान के आदेश के अनुसार according to the instructions of Bhagavan, he left. उन्होंने जाकर के मैत्री और Uddhava विदुर के went साथ में and met Vidur and Maitri. All these described. और इधर से भगवान जब पेड़ के डाल पर बैठे और चिंतन भी कर रहे थे। When Bhagavan, he was sitting in the branch of इतने the समय tree बहुत and दूर thinking. से एक And जरा then, नाम से from very far, a hunter called भगवान Jara, के चरण कमल को देखा। he saw the lotus feet of Bhagavan and he thought, हिरण की oh, it's the मुख होगा। face हिरण of के a, मुख लाल लाल आवाज होते हैं। it's like the mouth of a deer, because the mouth of the deer is like reddish. लाल आवाज होती And the feet of Lord is also very pink and reddish. है। तो वो देख करके सोचने So लगे this hunter saw कि this हिरण and thought, वहीं पर खड़े और उन्होंने क्या कि बहुत it's a दूर hunter. से So from really वो far, जरा नाम से वैद this क्या hunter कि called Jara, he तीर चलाया shot और an arrow. भगवान के चरण में लगा And this और hit the feet of Krishna. शरीर छोड़ के चले And गए। Bhagavan left his body in बोलो this way. वृंदावन बिहारी and left. लाल की जय। अच्छा ये सच है कि नहीं है? But is this true or not, this story? This is true. देखो एक बात बताता हूँ Okay, so I'll tell you also one thing. शास्त्र के विचार दो प्रकार हैं जो Yeah. अल्पज्ञ हैं और वो So the Shastra conception, two विद्वान kinds हैं। of दोनों के conceptions. विचार अलग होता है। For the foolish people and for the intelligent people. अल्प विद्वान अल्प लोग अल्प For those who ज्ञान वाले have लोग less होते हैं, intelligence, उनकी low ये intelligent कथा people, they have some. Shastra says one kata for the less intelligent. Why? शास्त्र में कहा गया है। Shastra explains. देखो ये जोरा वैद कौन थे? Who was this Jara, Jara hunter called वो Jara? बाली थे। He was आप जानते हो ना? Bali in the previous life, you know this. भागवत में ऐसी कुछ वर्णन भी करते Bhagavad हैं is saying these things also. क्योंकि भगवान रामचंद्र ने बाली को Because Bhagavan Ramachandra पीछे से बध कर दिया। killed Bali from the back, इसकी like from इसकी जो है back, by his back. बदला लेने के लिए So just to revenge, take a और revenge, बाली ने that's जरा why वैद होकर के आए। Bali came as the Jara hunter and किंतु killed ये him. बात सत्य नहीं है। But this is not true actually, it's not इसलिए true. कहा जाता है भगवान के This is लीला को called कहा जाता one है। kind of a Leela of Krishna called क्या लीला कहते हैं? Indrajalik. ये इंद्रजालिक लीला कहते हैं। This is the Indrajalik तो Leela इस कथा actually. को आप ध्यान दीजिए। Give attention to this katha. क्यों इंद्रजालिक लीला कहते हैं? देखो पहले तो कथा में आइए सिद्धांत में थोड़ा सा So let's come to the Siddhanta for a bit. I tell you. तब आपकी
विश्वास हो जाएगा। Then you'll be able to गीता में सब have faith भगवान in this. कहते हैं, In the Gita, आत्मा Bhagavan told, जल से जो भीगते नहीं the water is not wet by हैं, water. और अग्नि The से soul is आग not से wet वो by water. जलती है। The soul is not burned by हवा fire. से The soul is not touched by the wind as well. अच्छा वो उनके जो तीर के द्वारा उनके पैर में लग गया और भगवान मर गए, ये कैसे होगा? So how is it possible that God died from an arrow in his foot? आपके this हृदय में possible? आत्मा है कि नहीं? You have और soul भगवान also, के शरीर right? जो है सच्चिदानंद, उनके Body of देह Krishna देही विधानस्ति। is Sachidananda. There is no difference थोड़ा between इसमें Krishna थोड़ा आप and his body. थोड़ा विचार कीजिए, बद्ध जीव के शरीर और आत्मा में So, भेद है। there is a difference between the body of the conditioned soul and the soul itself. मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश। Our body is made of 5 elements: the और earth, भगवान के ether, शरीर fire, किससे wind, तैयार है? air, and सच्चिदानंद water. शरीर। But the body of Krishna is ओम Sachidananda, सच्चिदानंद रूपाय। made of spiritual ब्रह्म bliss, से भी knowledge, लिखा and गया, ईश्वर existence. परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान के शरीर किससे बना हुआ है? The body of तीन तत्वों Bhagavan से is बना made हुआ of है। 3 elements, Satchit and Ananda. तो भगवान के शरीर में So, तीर कैसे लगेगा? how भगवान कैसे possible this arrow in the foot of Krishna and Krishna would यदि भगवान die मर because गए of तो this? ये बद्ध जीव और भगवान में क्या अंतर रहा? So, if God would also die like this, what is the difference between God आप and थोड़ी living मोटी चावल entity? खाओगे ना 2 दाना, तो आप बिल्कुल पक्का हो जाओगे। Have you eaten the rice क्या from बोला? Gaudiya Math? So नहीं But- गौरी मठ की चावल खाना पड़ेगा। you have to eat the rice of Gaudiya Math. इधर उधर के चावल खाओगे ना, If you eat the rice here वो and आप जो there, कह रहे हो वही सत्य है। क्या बोला? किसके चावल खाना पड़ेगा? so you must eat the rice of the Gaudiya Math. This is true. खाना ही पड़ेगा, You must eat the rice of Gaudiya Math. नहीं तो कहोगे वहाँ भगवान को मार दिया। Otherwise, भगवान के कैसे you'll say that somebody killed God. रावण सीता Possible. की चोरी करके लेकर चले गए। Somebody killed God. गया कि नहीं गया? नहीं वो छाया सीता थी। Like Ravan took Sita. Actually, not the original Sita, but Chaya Sita he रावण took. कौन सा सीता की You चोरी should know करके all ले this गए? Siddhanta. छाया सीता। Ravan actually हाँ, took ये लोग Chaya गौरी मठ के Sita. चावल Oh, you're eating the rice of Gaudiya Math, you आपने know. खाई कि नहीं कभी? Have you eaten the rice of Gaudiya Math? Maybe ate a little. खाई नहीं शायद। केवल स्वीट राइस खा लिया। You only maybe ate sweet rice of the Gaudiya Math. हाँ, खीर खाई आपने। Only the sweet rice of the Gaudiya Math. आइए, कल आइए, आपकी खिलाई। Tomorrow come, I will feed you. मैंने इसलिए कहा था, ये जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, ऐसे कम बुद्धि वाले So लोगों those who के have low रुचि intelligence, उत्पादन करने just के make them लिए have more taste. भागवत में लिखा है, उसमें And जरा Bhakti is वैसे also saying नाम these भी things उल्लेख है, about this और इसमें कहा mantra है, called Jara. क्यों? And all this जो katha कम is in बुद्धि the वाले Bhagavatam. हैं, Why? For उनकी exactly रुचि for those who उत्पादन have करने no, के लिए कहना पड़ता है। to give taste to them. जैसे That's why all देखो, these kathas एक are there. बच्चा की जो पढ़ाते Just हो, like when a क्या kid is पढ़ाते हो? studying, for example, A for apple कहते हो, you say B for oh, ball, A ball for कहते हो, apple, B C for cat, ball, C C क्या for बोलते हैं? cat. You teach the alphabet to the Cat बोलते kid. हैं। C for cat. है? ये बच्चा को क्या करने दे? ना पढ़ाने में एक तरीका, छोटा बच्चा Like है there's तो a way, a पढ़ेगा नहीं। method to teach to the kid. पढ़ो। आप Because the केवल बोल kid रहे doesn't हो, want to A, study. B, C, D, भैया केवल यही बोलते रहोगे और उसके बाद वो A for So, apple, if you, और एक the apple the राम kid दोस्त will के ask पास, only देखो this, कितना सुंदर है, and the mother बच्चा says बोले, start हाँ, from बोले, this. मैं A, भैया, you see क्या the बोलते apple? हो? Look, A for apple. Then the kid will like, okay, mother, B give for me the ball, apple. Before ball. है? देखो बच्चों के पढ़ाने के लिए एक So ही to तरीका teach होता है। the kid, there is a process, like देखो, a method of teaching. जो आगे पढ़ करके जाते हैं, But those who विद्वान are होते हैं, already very learned and scholar are very high in the तो उसे studies, जब मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उसके and लिए they study ABCD mathematics ऐसे भी and वो geometry, use mathematics. करता है। They also use the same letters A, B, C, D in the उसके तरीका mathematics, वैसा ही होता है। but it's और another फिर way, in मैथमेटिक्स another में way. A plus B whole square And in पढ़ते हैं। mathematics, they also A study minus A B plus whole B square पढ़ते हैं। whole square, and also A अलजेब्रा minus से B लेके ज्योमेट्री whole square, algebra, geometry, so many है तो वही mathematical शब्द things. वही तो यूज करते हैं, किंतु उसके अर्थ दूसरी तरफ ले जाते हैं। So it's the same numbers, but taken to a different way now. सुखदेव गोस्वामी Sorry, same पाद letters, अल्प like बुद्धि A, B, वाले C, D, लोगों की taken to रुचि the other उत्पादन करने के level. लिए So Shukadeva Goswami told this katha वो लोग just कहें, to हाँ, ये तो give है। taste to these people, like low intelligent इसी को people. तो हमारे आचार्य के पास Because they'll say, करते oh हैं। yeah, this is true, I understand, yeah. इंद्रजालिक लीला कहते हैं। But all these actually is called बोले Indrajalik इंद्रजालिक लीला Leela. क्या है? What जैसे is जादू Indrajalik करके Leela? दिखाते हैं। It's like a magic trick.
जादूगर खेल दिखाते हैं। A magician showing its trick, आप लोग सब his trick. YouTube में जाइए, दिखाई You can पड़ेगा। go to YouTube and see some magic tricks. One person is sitting on a table or on a bench. ऐसे चाकू लेकर के, बहुत Somebody- सुंदर चाकू लेकर के उसे कमर से काट दिया। Someone cuts him in the middle, and so much blood is coming, and like the two parts of his body are cut in half. उनको लेकर ऐसे जोड़ दिया। Then he's united together again, and the person starts walking. Have you seen this trick? बोले कैसे है? How is it possible? Huh? आज यदि देखा नहीं था, आज वो देखना। If you haven't seen, you can go to YouTube today and see. Nowadays with internet, you एक can see. व्यक्ति के क्या की? So one person was laid on a bench, कोई कपड़ा ढका ढकी कुछ not नहीं। covering with any cloth, nothing. लेटा दिया। He was put in और one एक table, like शानदार and then they took one big like a sword, like a saw, and cut him in the middle, अलग हो गए। completely separated the two parts of his body by the waist, हैं? feet in one side and head in another side. आप तो देख कर के पास रक्त की धार बढ़ रहा है, देख कर के आप तक डर जाओगे। So you see this, and you see this और फिर कुछ समय बाद स्विच करके दोनों blood के will साथ be में जोड़ दिया। असल में afraid. फिर से- But then again, they unite together, the two parts of the body of the person, and देखो the person इसी का starts हाथ walking. कहते हैं इंद्रजालिक So नाम। this is Indrajadic illusionism, इसका मतलब illusionism, आपको हमारे विश्वास चक्र की काम में देखते हैं। illusion, delusion, like this magic एक tricks. खिलवाड़ी था, So Vishnu Chakravarti Pada tells one story. There was a magician. पैसे एकत्रित He करता था। used to make many magic tricks and get money एक from दिन वो people. क्या कि अपने One पत्नी day, और what अपने happened? बेटा या दो बेटा के साथ राज दरबार में आए। He और came, उन्होंने क्या कि this magician came to the court with his family, wife and kids. And this magician showed many tricks to the देख करके king. महारानी Seeing this, the queen was very महारानी ने क्या pleased. कि देखो अपने Then the महामूल्यवान queen gave her गजमुक्ता के हाथ में very expensive necklace made of the pearl of the elephant. उनकी पत्नी के हाथ में दे दी। She gave it in the hand of her husband. और पत्नी जब हाथ में ली, क्या बोलते हैं इसको? मदिरा जो खेल दिखाते हैं ना, नट। Okay, so the magician was like a person who was showing his presentations to the public. और पत्नी की जहाँ उनके पास जो है उनके दो बेटा था, वो दो बेटा हाथ से Okay, so the wife of the king gave this to the wife of the magician, this necklace. And then the mother gave to the kids, her kids were fighting for the necklace, and then suddenly in front of everyone, the two kids, they took some swords and they cut off each other's necks, fighting for the necklace. Wife told, because of a necklace, my two sons died, they cannot believe this, so she also cut her own necklace, her own neck, sorry, she cut her own neck in front of everyone. Then, so the man, father also told the magician, why am I alive if my wife and two kids are dead? So he also, in front of everyone, he took a sword and also cut off his own head out. So in front of everyone, very quickly, four deaths, and they were completely separated, the body in one side and the head another side. Everybody was seeing the stream of blood. Everybody became like completely surprised. What is this? Like completely, like shocked. So Krishna, God, king and queen, both were very upset. Queen thought, if I wouldn't have given this necklace, this fight will not happen, and then they would not kill each other. Anyway, in front of everyone, these four bodies were cremated. In front of everyone, everybody saw cremation. So the king was really upset. And after 3 days, they do they get together to express their lamentation for the person who departed. So king came, queen also came for this occasion. So the king was about to start this ceremony, and then a postman came and told Maharaj, a letter arrived for you, please open it. In the first page was written, Maharaj, that day we showed you some magic tricks, and you were really pleased. And because of this, your wife, she gave us a very expensive necklace.
Because of और this, चारों के शरीर को आप लोग के सामने everyone saw how we died and our bodies were burned in front of all of you. Maharaj, now again we are here, coming back. Now. ऐसे जब महाराज उस पत्र को पढ़ा, So when Maharaj read this पढ़ने letter, के साथ ही साथ immediately वही चारों these 4 persons came, the family came. कौन? Who? हाँ? So who came? नहीं वो नट No, that magician. The magician वही came वाले और उनके पत्नी with his wife and his 2 kids. 2 दो sons. बच्चे पत्नी और वाले सब देखो आश्चर्य ये कैसे हो सकता Everybody saw him, became completely shocked. In shock. कहते How महाराज is it यही possible? तो है इसको कहता है This is a real magic इंद्रजालिक trick. का। This is also Indrajalik. It's a magic है? trick. आंखों की ऐसे धंधा लगा देते Like हैं, some आप illusion, सोचते delusion हैं in the सच eyes, मानते and you think it's true what you're saying, but actually it's not. हैं। वो एक प्रकार कला होता है There's one art how to do this वास्तव में delusion. मंत्र तंत्र कुछ नहीं होता है Actually, it's not mantra tantra. It doesn't need the mantra or tantra. You think he has some mantra or इसमें tantra, तंत्र नहीं है like some power to do that, but actually it's not like this. It's some वो आंखों की ऐसे He कला knows बना how to देते हैं, make- आप सोचते हैं सच मानते हो it's like an art with the eyes, and he can control like what you're looking or something. हम भी यहीं पर So you think what you're looking it's true. You think that what you're looking at it's true. Before in the Vikas Bazaar was only like there were only so many thorny trees and only like actually was an empty field. This Vikas Bazaar full of dust and like in the time of Gurudeva sometimes they put some festival and some magician also, and then a person locked inside one box and they give you the key even for the lock. Then he just claps 3 times and the person comes back from behind you and come out from the box. How the person came out of the box, locked box. So I just told there is an art. Like I told about one person. A person cut in the middle in one table. Sometimes they take someone's tongue and they cut the tongue out and it's bleeding also, blood. Then you see that the tongue is there and the person is speaking okay. So this is Indrajalik, this is the illusionism. So this thing that's saying that the Jara hunter shot an arrow and actually he was Bali in the previous life. This is only for like low intelligent people to understand. Because people like, oh, Bhagavan died. Oh, does Bhagavan die? Come on. Because the person doesn't even know what is Bhagavan, who is Bhagavan. Nowadays there are many saints. So they show you some tantra mantra. This happens. Mantra has potency, yes. So they show some potency of some mantra and you think that person is God, Bhagavan. But sometimes they are arrested. They are arrested and it cannot even come out of the jail. So Bhagavatam is saying, Shukadeva Goswami says, hey Maharaj, listen Parikshit, about the destruction of the Jadu dynasty. God performing his in pastimes before departure from this world. Then Shukadeva Goswami also told many pastimes to Parikshit Maharaj. Then in the 12th canto, now let's end the 12th canto, Shukadeva Goswami Pad told also, we're near to the time of your death. But I'll tell you, the curse of the Brahma will not be able to touch you. If you remember what I told you, and in your spiritual body, you should go to Nitya Goloka Vrindavan. Actually, Parikshit Maharaj has absorbed in Gopi Bhav, and then he was able to attain Nitya Goloka Vrindavana Dham. Externally, we see that his body was left behind.
देखो So Bhakti तक्षक जो explains है that when Takshak was coming, और उस समय and then वो ऋषि there was one rishi. ये तक्षक के भी तक्षक डांटने पर भी काटने पर भी उस विष को भी बाहर निकाल उसके जीवित कर देंगे। That even Takshak biting someone, धन्वंतरि the venom could come out of the body and the person come back to life. So Dhanvantari had this knowledge. वो मंत्र विद्या आदि के औषधि के द्वारा By पुनर्जीवित knowledge कर देंगे। and Naushadhi's roots, he could make the medicine, he could make the person come back to life. तक्षक के साथ मिले बोले आप कहाँ जा रहे हो? मैं But परीक्षित then के महल में जा रहा हूँ। Dhanvantari met Takshak on the way. And And then Dhanvantari told him, going to the assembly of Parikshit Maharaj. Then Takshak in disguise told, oh, yeah, why? Then Dhanvantari told, because I have some potency that can make him come back to life. Then Takshak told, oh, what do you get? If you make this king come back to life, I'll get wealth. So Takshak in disguise told, so why are you going to help him there? I can also give you donations. And which mantra do you have that you can resurrect someone who is dead? Then Takshak told, yes, I have this mantra. So there was a very big and beautiful tree. So Takshak beat this tree, and this tree became ashes. Then the Mantri, with his mantra, he also resurrected the tree, and the tree became again all green, full of green leaves. So Takshak in disguise thought, oh, if I kill Parikshit and he'll again come back to life, then the curse of the Brahman will be useless. So he said, how many donations? How much do you want? You can take everything, diamonds, pearls, everything. And then what else? People were going. Also put some flour and he went to Parikshit Maharaj. And then externally, Takshak beat the body of Parikshit Maharaj. Shastra explains. But actually, first, already, Parikshit Maharaj had gone to Goloka Vrindavan. According to people's visions, we see that Takshak came and beat him, and that's why Parikshit Maharaj left his body. So what I want to say, Shukadeva Goswami Prabhu says, Hey Maharaj Parikshit, so now you should meditate. And remember the Bhagavad Katha and go to the abode of Lord. Then after that, we see the description of the Kali Yuga. Description also of the 4 yugas, Satya, Treta, Dwapar and Kali. Especially after God going to his own abode, Dharma took shelter of what? Remember when we were discussing the first canto, the conversation between Sutta and Shaunaka Rishi, we heard the Rishi said that by Shaunaka Rishi, they made 6 questions to Sutta Goswami. The last question was, Krishna Swayam Bhagavan, when he went to the abode, his own abode, Dharma took shelter of what? So the answer to this question is here. Dharma took shelter only of the Bhagavatam. And what is this in Kali Yuga? Chanting holy names. Because the intelligence of the human beings in Kali Yuga is very low, very wicked, very low. They're full of duplicity and hypocrisy, full of duplicity and hypocrisy. The human beings in Kali Yuga, they have so many bad qualities. So the human beings in Kali Yuga are very low, stupid, not intelligent, and they're completely contaminated with all kinds of faults. Actually, how long does it last, Kali Yuga? 432,000 years. How many I told? How old are you?
कितने बार आप आए और कितने बार गए? How many times you have आत्मा come, है how many ना, times you have अनंत काल से gone. आ रही है। आत्मा की आयु कौन वर्णन कर सकता You है? can describe the ये पहली बार नहीं age है। of the soul. It's समझ not में the आ first रही time. है? It's the ये first time. पहली बार ये शरीर में आप नहीं आए। आपके आत्मा जानी कितने Actually, your बार। soul has so many times has already. गीता में अर्जुन की भी कहने लगे, अर्जुन सुनो, So in the Gita, Bhagavan told, hey Arjun, listen to me. मैं यो सद्मनु को भी दिया है। तुम भी कितने बार आए, कितने बार Arjuna चले said, गए। so Krishna told, so many times I already told you this story. मैं भगवान होने This के kata, नाते मैं everything, सब so many कर people have सकता come हूँ। तुम भूल गए। and left, but oh Arjun, you forgot everything, आप but ये I सोच रहे हैं, didn't. ये पहली बार मैं शरीर में आया। So you think it's the first time you're in this body, in a सत्य body, है कि नहीं? but is it true or not? No. आत्मा की जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। Soul has no birth, केवल no एक death. शरीर से दूसरे शरीर हम Soul is चलते only जाते हैं। changing from one body to another body. कितने सप्त त्रेता दापर कली कितने युग बीत गए। जब से भगवान है तब से हम हैं। So many yugas passed. Since God exists, we are also here wandering this material world. एवं तथापि कहते हैं कलियुग की आयु बताते जा रहे हैं। Okay, so what is the time that Kali Yuga lasts? 432,000 years. उसी प्रकार दापर युग, त्रेता युग, दापर युग, So Treta Yuga, Dwapara Yuga was दो गुना, the तीन गुना, चार गुना 2 करके times more चलती है। time span and span of time of the Yuga. Treta Yuga 3 times more. Satya Yuga 4 भगवान times की ऐसी more. लीलाएं जो है, और विशेष करके कलियुग के मनुष्य के जो है So the human beings in Kali Yuga, बुद्धि और their intelligence, कार्य जो अत्यंत नीच गए। whatever they do is so low and wicked. जितने कलियुग बढ़ते जाएगा, The more Kali Yuga will grow, लोग उतने हिंसा परायण हो जाएंगे। people will become so violent. दूसरे की People will become so violent, हिंसा करते हैं। doing always violence and hatred to one another, having hatred towards one another. कलह ही चलता रहता है। So many quarrel in the house, आ जाएगा। everyone's houses, and you're thinking it's already very चोर, hard. डकैत, बदमाश, So many politicians are all thieves and this and that, and also so many diseases and also criminals everywhere. So this coronavirus that's for 2 years it's been going on, 1.5 year, coronavirus, it's nothing. The more Kali Yuga will grow, Shastra describes, diseases, so many things will be there. Bhagavatam describes. केवल लोग विलास व्यसन में ही मुक्त होते रहेंगे। But people will be just enjoying sense ब्राह्मण लोग gratification. ब्राह्मण धर्म छोड़ The देंगे। Brahmanas will stop doing their Brahmanic activities. The Shudras ब्राह्मण धर्म के काम करें केवल पेट भरने के लिए। will want to do the job of Brahmanas just to fulfill their bellies. So much diplomacy and hypocrisy. कोई नहीं करेगा उसमें। अभी हम लोग अच्छा So like now everything is okay. Why? Because we're doing some Bhagavad Bhajan. क्या नाम करते हैं? So which holy names are you chanting? Hare Krishna. But the more Kali Yuga will increase, like this duration, like Kali Yuga more and more, people will become so atheists. You see, people are so atheists also, even now. People don't have faith in the temples. They want to destroy the deities and break the deities. It came in the news, you saw, in Bangladesh. They broke the deities. First of all, people don't want to do Bhagavad Bhajan. At least do something. At least worship demigod and demigoddesses. I'm not against this. But not even these people want to do. Have you seen in the news in Bangladesh? The temples were destroyed. They broke even ISKCON temple. They even killed and beat so many people. But this is nothing yet. Nothing. All these outsiders from religion, like against the Vedic culture, they are coming and they will want to destroy. So at least you have many people here, some 200 people. But one day, not even the Bhagavad Gita will be spoken. Criminals, gangsters, thieves. For anything, they will kill people. Also, it won't rain so much anymore. People will not be able to harvest, like to grow things from the floor. Sabji, these things, fruits. So much hot. Sometimes too much rain, sometimes too much drought, and too much rain and everything will be flooded. You can see in the news also. Sometimes a flood somewhere.
ये जो देख रहे हैं ये So whatever you're seeing now, sometimes this calamity happens, but it's nothing as what is going to be in the future of Kali Yuga. Bhagavatam describes लोग नास्तिक बनते जाएंगे बस people will become completely atheists. स्त्रियां जो है केवल Women देश विलास में मत रहेंगे only completely absorbed in sense gratification. केस और कुशिल ना ऐसे करते रहेंगे सब भगवत भजन के साथ कोई नहीं रहे Nobody wants to do Bhagavad Bhajan. घर घर में Every house there will be only quarrel and quarrel. है अधिक बोले तो क्या If I speak too much, then but it's true. It's written in the Bhagavatam. क्या होगा नहीं होगा What will happen or not. केवल नाम मात्र लोग रह जाएगा और धीरे-धीरे मनुष्य के छोटे होते जाएंगे And also slowly the height of the human beings will decrease. छोटा हो जाएंगे मनुष्य बुद्धि भी छोटे हो जाएगी The intelligence also will be very small. लंबी है कि नहीं Now it's still high. सबकी कद क्या होगा छोटा उस समय मनुष्य के So they will be the height will be very short. Human beings will only live 10 or 20 years. Okay? Until now, maybe 100 years we can live. But the more Kali Yuga increases, human beings, even the lifespan will decrease. Lifespan of human beings. Everybody like desperate. कुत्ते आदि भोंकते रहे Like these jackals, the चोर डके सभी wolves, dogs barking everywhere. पालन तो करेंगे नहीं प्रजाओं को शोषण कर लेंगे The kings will only exploit the धन citizens, संपत्ति लूटेंगे steal उस समय money. दो प्रकार के लोग समाज के लोग रहेगा Two kinds of people in एक अत्यंत society. गरीब और एक Those who are अत्यंत too poor and those who are too rich. है। धनी व्यक्ति गरीब के जो है Those who are rich, पिसते रहेंगे they will completely exploit जबरदस्ती काम कराएंगे the poor and make them just like slaves, स्लेव just like slave work. वो उसी The पर चलते rich people make the poor people work like slaves for ना them. जानिए ऐसी फर्क है This will और be लोग everywhere. बातों बातों में झूठ And for बोलते हैं anything, people also आदमी lie. झूठ बोलता ही है। Now people lie also. किंतु उस समय देखो But that time will be इतने झूठ एक भी अपने 1% भी नहीं not मिले even 1% of truth. Everything will be lie and lie. कोई झूठी क्या है सच लोग नहीं And people think that the lie is गीता true. भागवत कोई पाठ ही नहीं करता। Nobody will read the Gita and the Bhagavatam. लोग भोग विलास में इतने People be उन्मत्त हो because जाएंगे। absorbed in sense gratification. अभी देखो जहाँ पर कथा Now you भागवत can कथा also होती see है, where there's कितने Bhagavad लोग आते Gita. हैं। How many people और जहाँ come? पर ऐसे डुक 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 बजाए But if there's somebody disco playing dance, like or disco dance, this people want to go there. भगवत चर्चा में लोग पैसा खर्च नहीं People करेंगे don't want to speak, spend money for speaking और about जैसे God or anything like that. फालतू फालतू खर्च करते जाएंगे But they want to. ये भागवत में सारे Anyway, विवरण so the दिए गए। Bhagavata is describing एक all एक एक this करके महाराज ये कलिजुग के one by one. Oh और Maharaj, अंत में Kali Yuga. कलिजुग के अंत में The end of Kali Yuga, मूसलधार से बारिश होगी जैसे लिखा है भागवत में लिखा है देखो हाथी के सूंड के भांति Bhagavata explains जोर तेज धार से the rain will be like trunks of elephants. बारिश तो कम हो जाए So now it doesn't rain like this. By that time, the rain will be very hard. ऐसे होता है। And sometimes no rain. यहाँ तक भी देखो माँ Also, अपने पुत्र की the जो है, mother will मांस खाना शुरू कर देती eat the flesh of her own baby, Kali Yuga, because the mother is hungry. है। कहाँ तक लोग बोलेंगे? Hungry mother will eat the flesh of her own baby. नहीं। ऐसे कलिजुग के वर्णन के So पश्चात Kali Yuga, this will happen in Kali Yuga. After this, परीक्षित महाराज के आरु अनेकों भगवान की अवतारों की कथा सुनाया है। so उसमें विशेष करके कल की अंत में कल की अवतार भी प्रकट so also he told in the end of also Kali Yuga, Kal ki और avatar कल will के come, अवतार होकर के and Kal ki दुष्ट avatar राजाओं के जो है, will come वो and दमन करेंगे। destroy these terrible और kings, पुनः जो है, wicked kings, है, and again समाज की व्यवस्था he'll arrange for स्थापना अधिकार। establish the good society. और उस समय कहते हैं ये कली से उद्धारण के उपाय क्या है? And what is the way how to इसके deliver लिए in कहते Kali हैं, Yuga? ये देखो ये Here is भगवान saying, नाम के नाम। by the holy names of क्योंकि Lord. सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं महाराज Shukadeva Goswami Pada says, Hey Maharaj इस समय Parikshit, भागवत की कथा जो नाम संकीर्तन में द्वारा प्रारंभ हुई। Bhagavatam starts with Nam Sankirtan, Satyam Param Dhimahi. परम सत्य संग भगवान Supreme truth is Swayam भगवान Bhagavan. की कीर्तन नाम संकीर्तन And we have to glorify his और names, देखो Nam षष्ठ Sankirtan. स्कंद में In the sixth canto also, नाम it's mentioned, संकीर्तन की ही बात बताया there are also glories of Nam Sankirtan, the story of Ajamil. अजामिल के पक्ष हम लोग ने श्रवण किया Like we heard the story of Ajamil.
यदि कली से कोई बचना चाहते हैं If you want to be क्या करें? saved from Kali, नाम संग you have to chant holy names. अपने बेटा के क्या नाम रखो? So which name you have to give to your son? नारायण। Narayana. हक्कू बक्कू चक्कू डक्कू Don't मत give the रखो। name Ako Baku Daku Chaku. है, क्षमा करें, Please forgive me, बोलना पड़ता है। but I have to say हमारे this. हमारे घर में आके हमारे You say, घर के बच्चे Maharaj, को निंदा कर रहे हैं। You're criticizing my son मेरे बच्चे के नाम रखा टक्कू हक्कू because I gave बक्कू। to my son the name और Harto हमारे बच्चे के Baku नाम Chaku. लेकर के आप हक्कू बक्कू टक्कू बोल रहे हैं। Exactly, you're mentioning this name, शास्त्र में लिखा है। but it's written in the क्या Shastra. लिखा I है? have to say it. क्या लिखा है? What is written? बच्चे के नाम हक्कू बक्कू डक्कू चक्कू मत रखो। Don't give to your son the देखो, name चक्कू चलाएगा Haku तुम्हारा। Baku Daku Chaku. Chaku means knife, क्या otherwise नाम he'll रखो? stab राम you. रखो, कृष्ण रखो, Give the name गोविंद Ram, Krishna, रखो, Govindu, श्याम सुंदर, मदन Shyam मोहन। Sundar, Madan बेटी Mohan. है तो किसी If से it's a राधा girl, नाम रखो, ललिता Radha, नाम रखो। Lalita. हैं? कितने सुंदर नाम है। Beautiful कम से कम names. नाम नहीं भी कर सकते If you हो cannot माले chant holy महाराज। names in the कम से Japamala, बच्चा के नाम at बेटी के least नाम you're रख दिया। calling your son or राधा daughter गोविंद कम से कम दिन में Radha तो हम लोग Govinda. 10 बार तो डक- Maybe पुकारोगे 10 नहीं। times per day you're calling the name of अरे your son. गोविंद चलो स्कूल में जाना है। Govinda, chalo, go to school. गोविंद उठो। Govinda, wake up. हैं? 10 बार कम से कम 10 At माला तो हो least ही जाएगा, 10 you नाम हो जाएगा तुम्हें। then chanted 10 times the names of God during your day. इसलिए कहते हैं कलियुग में इसलिए ब्रज में ही एक है, ब्रज में कोई हालो नहीं In बोलते। Braja, nobody is. क्या बोलते हैं? फोन लेते हैं ना, क्या बोलते हैं? Nobody say राधे, hello. जय श्री राधे। Everybody's like hello, not जो hello. They ब्रजवासी say नहीं है ना, Radhe, Jai वो Sri तो Radhe. है, हेलो। Those who are not Vrajavasi, they're like hello जो when they ब्रजवासी pick है up the ना, phone. वो क्या But बोलते those who हैं? are Vrajavasi, they're like राधे, जय श्री Radhe, राधे, Jai Sri Radhe, हैं? जय श्री कृष्ण। Jai Sri Krishna. They pick up the phone like this. अरे बताओ ये कलियुग में ना ये फोन आकर के ना हमारे Actually, सारी भारतीय संस्कृति In Kali Yuga, the बिल्कुल क्या phone करते came हैं? and this completely destroyed the Vedic culture. Phone, हैं? the मैं भी telephone. देखता हूँ I see this. सुनने के लिए हरि कथा सुनने के लिए बैठे You sit फोन for लेकर Hari बैठ Katha जाते and you हैं। sit with your और phone. 2 सेकंड के बाद After 2 बजना seconds, शुरू कर दे, फोन लेकर बात phone करते is हैं। like कथा ringing कहाँ and then you सुने? pick up the phone. You cannot listen to Hari Katha. हैं? इसलिए कहते हैं जब कथा सुनेंगे So कम that's से why कम when 1 you घंटा क्या hear करो? Hari Katha, at least for 1 hour, Switch off you have to करो। switch off your phone for 1 इसके hour. बाद सुनो। After that, you can hear. कथा सुनने के समय You can switch on. But in the time of Hari Katha, क्या बोले फोन में क्या you switch off your phone and keep other place. Keep in the kitchen. Keep it in the kitchen. नहीं हाँ भाई ये सच बता Yes, this is true. I'm telling the truth. Truth. अरे कम से कम 1 घंटे तो भगवान की कथा सुनो At least for 1 hour here. अच्छा 7 Hari दिन में Katha. मेरी कथा सुनी Okay, you आपने have heard for 7 days Hari Katha. इसके आपको फल क्या मिला What is आप the बताओ। fruit you got? Tell me. मैं तो पैसा लेने के लिए ना मैंने I कोई didn't दवाई want नहीं किया। any money. I don't want any money. Not आज about 7 this. दिन बैठा मैं एक पैसा भी लिया नहीं हूँ 7 days I sat here. I don't want money. I didn't come for money मैं here. एक चीज देने के लिए But I just want to give one thing. Whatever I heard from Gurudev, I want to tell you. वो है क्या चीज What is भगवान की it? कथा सुनो I want you to hear Hari Katha and chant holy names. हैं? आज समझ में और बहुत लोग हरे नाम नहीं करके Many people, हरे राम से शुरू कर देते they start chanting like Hari Ram first and Hari Krishna after. This is wrong. हैं? बहुत बड़े बड़े पंडित कहा देते Many हैं great Pandits अरे also नहीं they कलयुग say, के oh, महामंत्र the हरे राम mantra of हरे राम Kali Yuga राम is राम Hari Ram, Hare Ram, Hare हरे Ram, कृष्ण 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 हरे हरे and then Hare किंतु Krishna, ये Hare ठीक Krishna. नहीं है। But this is not proper. हैं? ये जो महामंत्र में कहाँ से शुरू होना चाहिए So हरे the कृष्ण Mahamantras हरे start from Hare Krishna, not from Hare Ram. कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ये शास्त्र व्यासदेव के लिखित ग्रंथ So भी है actually, this Mahamantra is in the shloka written by Vyasadeva in the books, in the Granthas. बहुत बड़े You have to बड़े read. इसके मानते हैं कोई Many कहते great नहीं Pandits चैतन्य महाप्रभु आकर don't के follow this. And इसको they say, उल्टा oh, कर दिया no, Mahaprabhu came and चैतन्य he changed the महाप्रभु पहले order. सीधी था But before everything was right, but कैसे Mahaprabhu उल्टा came किया and लोग he मना कर दिया। changed और देखा से everything. जाओ। चतुर्वेदी समाज के लोग वो राम का अर्थ लगाते हैं हरे राम से। हाँ। ये ये भी युवा बैठता में नहीं लगा है। इसलिए आप लोग के निकट प्रार्थना है So I pray, request all of you, हरे कृष्ण जैसे हमारे शास्त्र chant the Hare Krishna. And exactly as Shastra अब says. ये नाम संकीर्तन के दान है ये श्रीमद् So the भागवत Bhagavatam finished the verse, the last shloka of Bhagavatam is about Nama यही नाम Sankirtan. संकीर्तन इसी श्लोक के संग This verse. याद करना पड़ेगा। Remember this हैं? verse. नाम संकीर्तनं जस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरि परम नाम संकीर्तनं जस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरि
last sloka of the Bhagavatam. यही नाम संकीर्तन के द्वारा ही So by Nama Sankirtan, हम समाप्त कर रहे हैं, we'll finish. क्योंकि कलयुग में और किसी Because in का Kali Yuga, जितने भी nothing कथा else. श्रवण So, किया as much as you listen to Hari सार क्या Katha, है? the essence of all Katha is हरिनाम Harinam. है। और ये हरिनाम के द्वारा And by पाप अपने आप Harinam, नष्ट हो automatically जाते हैं। all your जैसे हमारे sins are चैतन्य destroyed. महाप्रभु क्या है? Mahaprabhu says, महाप्रभु ने Mahaprabhu in the Shikshastaka, he told पहले श्लोक in the first verse, चेतु दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैर्वचंद्रिका वितरणं विद्यावधु जीवनम आनंदम दीवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत साधनम सर्वात्म श्रवणं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये नाम संकीर्तन कलियुग में जो भी कथा भी in श्रवण Kali Yuga, किया, whatever you hear, जो कुछ भी किया, whatever you did, सब की मूल क्या है? हरिनाम। the essence